क्या चक्कर है? Believe your microphone is off on. All right, gentlemen. So सबसे पहले तो आपकी डांट सुन लूं मैं कि आपको नोट्स नहीं भेज पाया। मेरा इंटरनेट कल से नहीं चल रहा है, मोबाइल में तो चल रहा है बट देयर सम प्रॉब्लम। आई वाज थिंकिंग कि अभी मैं भेज लो बात करने से पहले, शुरू करने से पहले, बट डिड नॉट हैपन। सो देखते हैं, लंच ब्रेक में देखते हैं। ओके, सो व्हाट आर द टॉपिक्स कंप्लीटेड, आदित्य? The last LRIT. topic was LRIT. Last was LRIT. So we have seen Banvas, AIS and LRIT, correct? Correct, sir. Yes, sir. All right, so our next topic is VDR. Is that correct? VDR के लिए हमने रखा हुआ 2 क्लास। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now VDR. You might have heard the name of black box. Black box aircraft में होती है। Yes, sir. Black box का जो एक्सीडेंट्स वगैरह होती है, क्रैश वगैरह होता है, तो ब्लैक बॉक्स निकाल के लेके आते हैं। Black box is the device which is having all the data stored from the aircraft. The system of recording that data is known as FDR. Similar to the aircraft black box and FDR, we also have on board ship something called VDR, voyage data recorder. वो फ्लाइट पे जाती है तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, हम वॉयज पे जाते हैं तो वॉयज डेटा रिकॉर्डर। एसेंशियली दोनों का काम एक ही है। क्या काम है? It records all activities of the bridge, all navigational parameters of the ship, everything related to the operation of the ship is recorded on a continuous basis for at least last 48 hours. पिछले 48 घंटे की रिकॉर्डिंग, कम से कम 48 घंटे की रिकॉर्डिंग is always available for reading.
If it is recording, that means it's all electronics. So VDR is nothing again but a computer system. A computer system designed to do a specific kind of job. What is that job? To record data. What data record? Anything and everything related to working of the ship. So when somebody is in the bridge, let us say master is there in the bridge, pilot is there in the bridge, they are communicating with each other, बात कर रहे हैं, उनकी बातचीत रिकॉर्ड होगी. Assisting officer is talking to master, उनकी बात होगी. Master is giving command to the helmsman, record होएगा. The helmsman responds back, yes sir, coming to 320, वो record होएगी. Everything which is spoken, all verbal communications in the bridge is recorded. Apart from that, there are other navigational parameters which are recorded. Every recording is with timestamp. What is timestamp? Timestamp is date and time of an event. आज 26 तारीख को 10:12 पे ये. So there are so many of navigational parameters which are recorded. When the ship is sailing, there is position, course, speed, what was the radar picture saying at that time, what was the EGDIS saying at that time, what was the rudder angle at that time, what was the engine RPM at that time, what was the wind speed, what was the depth, what was the course over ground, what was the speed over ground. If there was some communication going on, if there was something coming on the VHF, everything is recorded. These are few things that we have talked about. But additionally, there are other things also recorded, like the logbook, electronic logbook. EGDIS में आपने देखा होगा या सुना होगा कि whatever is happening on the EGDIS is recorded in the form of an electronic logbook. Again, course, position, speed, etc. So उसकी एक कॉपी VDR में भी रिकॉर्ड हो. These are few things that I have spoken, but apart from that, there are other data also. We'll see all the data recorded by the VDR in more detail. आगे हम पढ़ेंगे कि what are the data recorded by VDR. एक question बनता है इसका. What data is recorded by the VDR? So we will know specifically what data. Including this, there will be other things. Okay, so we have recording of the data for last 48 hours. What for? What is the use? Use is the same as it is with the black box of this aircraft. क्या होता है? कुछ idea होगा, कुछ नहीं भी होगा. But once this is available, recording, it can be connected to a computer using normal ports. And on the computer, all the data can be reviewed once again. क्या था? 24 घंटा पहले क्या था? 36 घंटा पहले क्या था? Everything is available. All those data which was recorded, the communication, the VHF, the wind speed, the rudder angle, the engine, radar, EGDIS, etc., everything is available. And an investigator seeing all this data can recreate the situation of an incident. Supposing कुछ accident incident होता है, ship ground हो गई, collision हो गया, fire हुई, all these things can be recreated. This was the situation. There were two ships coming from that side. उनका course speed ये सब दिखा रहा था. हम अपने स्पीड से इस तरफ जा रहे थे, इतने स्पीड से जा रहे थे. Course was this, position was this, radar was showing this picture. So putting everything together,
the scene of accident can be recreated, and this helps in understanding a situation. What was the basic reason of an accident? If we know the reason of an accident, which may be a genuine reason, which may be due to fault of somebody, which may be due to negligence of somebody, then the responsibilities can be located. Who is responsible for this? Maybe I was taking all actions correct, but the wind speed was so much that I could not do anything. Nothing was there in my hands. So given the situation, I did everything probably right, but because of external conditions, something happened. It may also happen that I was not doing something right. We had to pass port to port, and I was thinking I will go from starboard to starboard, not following the rules. So this can be found out when we do the investigation. So these information further on can be utilized for various purposes. एक तो ट्रेनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं कि देखो ये गलती हुई, हमें ये गलती नहीं करनी है आगे। या हम ये भी ट्रेनिंग ले सकते हैं कि ये देखो right decisions were taken, that is why we are safe. So we should follow this procedure. It can be used for training. Because you are getting recorded, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है द ब्रिज में, और सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप ROR फॉलो नहीं करके कुछ उल्टा कर रहे हैं तो इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। दैट मीन्स एनीबडी लेटर विल से व्हाई डिड यू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, जवाब देना होगा आपको। सो because you are getting recorded, you will try not to be found in wrong situation. That means you will do everything, try everything to do right. That means promoting best practices. Just by recording, it is acting as a deterrent for you to do anything wrong. So you take action as required. You try to adhere to rules as much as possible. Promotion of best practice. But apart from that, the main and foremost purpose of the VDR is to accident investigation, accident or incident investigation. Supposing an accident takes place, and if there was no VDR, then how to find out what happened, why it happened, what were the conditions? Well, I can only ask. As an investigator, I can ask the officer on watch, please come, I have to interview you. So I'll ask questions to him. I will ask engine room personnel also for finding out the reason. अगर collision हुई तो दूसरे जहाज को भी पूछेंगे, उसको भी पूछेंगे, उसको भी पूछेंगे. And as the normal human nature is that we try not to find our fault, most cases, not always, but most cases. We try to escape by saying somebody else was wrong. तो इन्वेस्टिगेटर कंफ्यूज हो जाएगा, किसकी बात माने किसकी नहीं. So he will add up few things and then try to make his mind, okay, this is what happened. He will make a decision. Now this decision can, most probably it will be right, but there is a possibility that it can go wrong also. But if he had the recording, he does not need to ask any question to anybody. Everything is here. What you said is here. What you did is here. What was the ship doing is here. What was the other ships doing here? Everything is available. So need for asking question is reduced. Okay. So it helps in accident and incident investigation.
Self-assessment, another usage of this. I can find out what I did wrong or what I did right by reviewing the recording. In the spur of the moment, I can take some action, but later I can review. The ship's personnel can review it, or the company as a whole can review it and try to learn from what good things or bad things were done. So self-assessment. And finally, it also helps in, yes, Aditya, bolo. So the maximum recording period is 48 hours, or it depends upon the make and model of VDR? Okay. IMO always specifies what is the minimum requirement for any device placed on board ship. Any device which is fitted on board ship has to meet minimum requirement. It should do at least this much. If it is more than that, I have no problem. Aditya, have you heard something called safe manning certificate? Yes, sir. Okay. How many personals were required on your ship for safe manning? Just for example, if you remember. Yes, sir. There were 2 AB, 1 OS. No. Like this. In certificate, how many people? This was 20%, sir. 20%. And how Yes. many total you have been sailing with? We had 25. See, so minimum requirement is 20. If you are 25, I have got no problem. So all equipment, yes. Sir, it depends on ship to ship how many persons are required on ship, or it's a guideline that from the IMO that we need this much person. For the safe manning. Yes, for the safe manning, sir. It Safe depends from the manning ship to is ship. decided by the flag administration. A small vessel, small number of people, big vessel, big number of people, depending on the kind of job the ship is doing, depending on the size of the ship, the type of the ship, minimum personnel will be required as per the flag administration. IMO is not saying anything about this, but all the IMO countries, IMO contracting governments will ask for this certificate. Have you got a certificate of safe manning? अगर मैं इंडियन शिप हूं तो इंडियन रजिस्टर का सर्टिफिकेट दिखाऊंगा. आईएमओ नहीं कहता इसमें, ये फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है कि इतने लोग होने चाहिए. आईएमओ क्या कहता है कि सभी कंट्रीज को इंश्योर करना चाहिए कि उनके जहाजों पे सेफ ऑपरेशन के लिए मिनिमम आदमी डिफाइन करें. अंडरस्टूड? यस सर. आईएमओ कहता है सभी कंट्रीज को कि भाई आप लोग सब लोग हम लोग मिलकर के ऐसा करें कि सब अपने अपने जहाज में मिनिमम आदमी डिफाइन करें. तो सब ने कहा हाँ हम करेंगे. अब सब कंट्रीज अपने अपने यहाँ चले गए, सब जहाजों को बोला कि सेफ मैनिंग के सर्टिफिकेट ले लो मेरे से, आपकी जहाज अच्छी इतनी बड़ी है, इतने नंबर ऑफ पर्सनल होने चाहिए. सर्टिफिकेट दे दिया, जहाज में सर्टिफिकेट है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैड अ शिप, we were sailing on a ship 220 meters doing certain kind of job. 17 people were required. We were sailing with 24. No issues? Understood? Yes sir. Yes sir. Similarly, बनवास के लिए आपने देखा कि how it should operate, the operation of बनवास, the functional requirements and the operational requirements, they were defined. कॉलिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, प्लस माइनस इतना टाइम हो सकता है, ये 3 स्टेज होने चाहिए, ये सब डिफाइंड था ना. यस यस यस. EIS में देखा कि 4 तरीके का डेटा होना चाहिए, इतने इंटरवल पे होना चाहिए, SOTDM में फंक्शन करना चाहिए, डेटा इंटरवल ऐसे रिपीट होना चाहिए, 2 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. सब देखा ना. यस सर. यस सर. LRIT में आपने देखा कि हर शिप को ट्रांसमिट करनी है, मिनिमम इतना डेटा ट्रांसमिट करेगा, मिनिमम इतने नंबर ऑफ डेटा ट्रांसमिट करने हैं, मैक्सिमम इतना हो सकता है. कोई भी इक्विपमेंट हो लेकिन डेटा चाहिए मुझको.
अगर बंद करनी हो, कुछ चेंज करना हो तो मुझको इन्फॉर्म करना होगा। डिफाइन किया ना? सर, yes, sir. फायर पंप लगाई है, फायर पंप ऐसे होना चाहिए, इतना डिस्चार्ज होना चाहिए, इतने वोल्टेज पे ऑपरेट होना चाहिए, इतने से इतने के बीच, वगैरह वगैरह। फायर पंप के लिए भी डिफाइंड होता है ना? Yes, sir. एफएफए की इक्विपमेंट डिफाइंड होती है ना जहाज के लिए, कि इतने लोग हैं तो Yes. इतना पीपी होना चाहिए, इतना लाइफ जैकेट होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, Yes. पायरोटेक्निक्स में ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, सब डिफाइंड है ना? Yes, sir. ऐसे ही every equipment is defined what it should do minimum. ठीक है आदित्य? Yes, sir, understood. So 48 hours is the minimum requirement. If you are able to record 96 hours, I have got no problem. Minimum is 48 hours. आपके पास कोई भी सिस्टम होएगा, कम से कम 48 घंटे की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. That's IMO requirement. If you can record 60 hours, I have got no problem. 600 hours, no problem. 6,000 hours, I haven't got any problem. Another requirement is that there should be a process provided or a feature provided to stop the recording when you want it. Why you want to record, stop the recording? So that you can take the backup. मान लीजिए some incident took place, and as a master you are thinking that this may be requiring investigation later on. तो आपने उस प्रोसेस से डेटा को स्टॉप किया, निकाली, बैकअप लिया, फिर से वापस चालू कर दिया। और दूसरा कंडीशन कि शिप अग्राउंड हो रही है, हो गई। क्यों हुई, कैसे हुई, टाइड कितना था, क्या कम्युनिकेशन हुई, एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड। नाउ द शिप इज स्टक, नॉट मूविंग, देयर विल बी हेल्प कमिंग एंड दिस एंड दैट। हो सकता है सुपरिटेंडेंट आए जहाज पे, इंश्योरेंस कंपनी के लोग आए, सब करते कराते मान लीजिए 2 दिन हो गया, 48 आवर्स क्रॉस्ड। अब इस बीच में तो जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो तो साफ हो जाएगा। लास्ट 48 आवर्स तो जब जहाज खड़ी है, ग्राउंड हो करके स्टक है, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग बचेगी। तो देयर शुड बी बटन प्रोवाइडेड दैट व्हेन द ग्राउंडिंग टुक प्लेस, उसके पहले की रिकॉर्डिंग, व्हाट वाज द रीजन फॉर व्हिच द ग्राउंडिंग टुक प्लेस, so that feature is also provided. So VDR is basically a recording system. Like in a computer you have CPU, central processing unit, basically all microchips and all that. Similarly here also there is a CPU. Your computer, what is it doing? It takes input from keyboards, takes input from your microphone. It has got a camera, takes input from video camera also. Then what is the function? सब capture कर लिया तो it can play back on a screen. It can play back on the audio speaker जो लगा हुआ है. So these are the data, and then you are able to play different kind of games, and you can do designing, etc., etc. So this computer is made for a given kind of job. VDR is made for given kind of job of collecting the data, recording it, and saving it in something called FRM, final recording medium. So what is black box for the aircraft is what we call the final recording medium. The final recording medium is where this minimum 48 hours of data is available. We will see it in details. अभी तो हम introduction की बात कर रहे हैं. So FRM, final recording medium में जाके record हो गया, कुछ actions वगैरह होगी तो इसको access करेंगे, कंप्यूटर से लगाएंगे, उसको play करके देखेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, वो पता करने की कोशिश करेंगे.
So as a VDR, there are mostly the data available is in the ship itself. अब VDR लगाना है, VDR is supposed to record the position. तो पोजीशन के लिए VDR में नहीं, जो एक्सटर्नल GPS है उसका इनपुट आना चाहिए. What is the course of the ship? Gyro compass. तो उसका इनपुट आना चाहिए. What is the depth? उसका इनपुट आना चाहिए. What is the radar saying? radar से इनपुट आना चाहिए. What is the ECDIS saying? ECDIS का इनपुट आना चाहिए. What is the rudder angle indicator? वहां से इनपुट आना चाहिए. What was the engine RPM? वहां से इनपुट आना चाहिए. So this device is having multiple ports to connect to different equipment, sensor equipment. Multiple ports available, collects data from all the devices and again processing करेगा और set कर देगा, record कर देगा final recording medium. फाइनल रिकॉर्डिंग मीडियम में भी कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है. अरे थंब ड्राइव है तो वो एक तरीके का रिकॉर्डिंग मीडियम है. हमारा हार्ड डिस्क होता है, रिकॉर्डिंग मीडियम है. हम जो फाइलें बनाते हैं, सेव करते हैं, हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है. बाद में चाहते हैं तो उसको वापस हम खोल लेते हैं, स्क्रीन पे देख लेते हैं क्या फाइल बनाई थी. Same way, VDR is also recording all this information and saving it onto a something called final recording medium, where the minimum available data should be for 48 hours. जो नया डेटा रिकॉर्ड हो रहा है तो पुराना डेटा आउट होता है. मतलब 48 घंटे की डेटा रिकॉर्ड हो गई. अब 49वां 49th आवर विल बी रिकॉर्डेड, तो पहला वाला आउट. फिर 50 रिकॉर्डेड, नंबर 2 आउट. सो हमेशा उसके बीच में इतना 48 घंटे का डेटा रहता है. अगर नया आया तो एक चला गया, नया आया तो एक चला गया. एक एक नहीं, सेकंड बाय सेकंड होता रहता है. सो ये सब तो बाहर से आ गए. ये ऑडियो कहां से रिकॉर्ड होगा? हमारे जहाज में माइक्रोफोन तो लगे नहीं होते. तो दैट माइक्रोफोन कम्स विद द VDR. जब VDR की सप्लाई होगी तो माइक्रोफोन आएंगे जहाज में साथ में. दैट इज पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. And not one microphone but many microphones. Why? Because we have to capture the whole of the bridge. कोई यहाँ खड़ा होकर बात कर सकता है, कोई वहां खड़ा होकर बात कर सकता है, कोई ब्रिज विंग पे बात कर सकता है. I want to record everything. So there are number of microphones placed inside the bridge and other microphones which are outside in the bridge wings. These microphones are basically coming as part of installation of the VDR. So what we have seen or what we have discussed so far, voice data recorder is an electronic device which records all data pertaining to the ship's operation continuously for last 48 hours. This is totally automatic in operation. आपको कुछ नहीं करना. So it will continuously record this data automatically. As we said, new data in, old data out. उतने देर का data available हुए. So records all this data for last 48 hours, which can be utilized by the investigator later on if there is an incident, accident happening. The audio, bridge audio, what we speak there in the bridge, we call it bridge audio. So bridge audio can be recorded by the microphone. Other data is collected from various devices, various equipment on board ship. Like we said, radar से आएगा, ECDIS से आएगा, gyro से आएगा, echo sounder से आएगा, GPS से आएगा, speed log से आएगा, वगैरह वगैरह. So all this data will be coming from different equipment.
So let us go to the slides and we'll talk about this. You will read through, जो हमने डिस्कस किया वही होएगा, समझ में आना चाहिए जो आप पढ़ेंगे स्क्रीन पे, अगर नहीं समझेंगे तो फिर से एक्सप्लेन करें. So we are recording this, just last sentence, we are recording this for what purpose? Objective is to record. Why? First of all, accident investigation, accident or incident, self-assessment, training support, response assessment, and reduction in insurance cost. When we know that we will know the truth, my risk is less. अगर मुझको कुछ पता करना हो और मुझको मालूम है कि मैं तो सच तक पहुंच जाऊंगा, तुम कुछ गलती करोगे तो मैं पकड़ ही लूंगा, तो आई एम हैविंग लेस रिस्क ऑफ गोइंग रॉन्ग. अगर डिवाइस मिल जाएगी वीडीआर मुझको तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये हुआ था, अच्छा तुम्हारी गलती ये है. सो दैट reduces the premiums of the insurance also. All right, so let's share the screen. Okay, before that, let me find out the slide, the PPT. 1 second. खुल जाओ सिम. All right. My screen visible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. All right, so this is what is VDR. The main computer system, the CPU is this one. There is a display, what is called alarm module. यहाँ पे इसका काम कैसे कर रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या ऑपरेशन है, वो शो करता रहता है. यहाँ पे अगर कुछ मैल फंक्शन हो गई तो ऑडियो विजुअल अलार्म आएगा इसमें. एंड दीज आर व्हाट आर द रिकॉर्डिंग मीडियम, फाइनल रिकॉर्डिंग मीडियम, द ब्लैक बॉक्स ऑफ द VDR. But the black box is not black. It is orange color or yellow bright orange color. तो बात उठती है कि हम लोग ब्लैक क्यों बोलते हैं उसको? This is just for fun only. Why do we call it black box? Okay. My understanding is black box we call it because it absorbs everything. Something looks black because it does not reflect anything back. अगर कोई लाल रंग की चीज हम देख रहे हैं तो वो लाल नहीं है, लाल छोड़ के बाकी सब है, उसने बाकी सब कलर को तो एब्जॉर्ब कर लिया, लाल रंग उसने वापस फेंक दिया जो हमारे आंख तक पहुंच रही है. So basically black box is going to absorb all things that are coming, all information is soaked by this, and so
probably that is why they call it black box, but actually it is normally of bright color. Just read through. We already discussed this, some introduction given. Do let me know if you want to ask some question if something is not understood. Please be honest and keep reading. Next. वेट सर Wait, okay. एक बार वापस गया. One second, please. Yes, okay. Next करूं? यस सर All right, next. Okay, when I'm saying 48 hours, is there some disagreement? Is there somebody who wants to say कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, हमारे जहाज में तो इतना होता था. No, sir. No, sir. Okay. That's very good answer. All right. पहले की रिक्वायरमेंट में 12 घंटे की रिक्वायरमेंट थी. Just for your information, when initially the VDR became mandatory, so the recording time was 12 hours. Now it has been amended to 48 hours. और भी बहुत सारे नए फीचर्स जुड़ गए इसमें as per new amendment. So we'll study about the new amendment only. Sir, when it was amended? Where it was amended? When? When or where? When it was amended is in 2012. Amendment came in 2012. Became applicable in from 1st of July 2014. Okay, sir. Okay, so this 48 hours is a requirement as per the new amendment, which is effective now from since 2014. Next. Slide number 6. What is the purpose of the VDR? सर लास्ट वाली का स्क्रीनशॉट लेने दो. स्क्रीनशॉट लेना है ये. देखो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है. झूठ मूठ का तुम अपने डिवाइस का मेमोरी भरोगे. अभी नोट्स आ जाएंगी, सारा कुछ आपको मिल जाएगा. Everything will be available, both in question answer form as well as in notes form. Next, we discussed accident investigation कैसे होएगा. Response assessment वो भी हमने देखा. ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं. Reduction in insurance cost ये भी देखा. Promotion of best practices is also what we have discussed कि जब मालूम है कि रिकॉर्डिंग हो रही है
तो उल्टा सीधा नहीं करेंगे, ROR से अध्ययन करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे. So all this can be the purpose of VDR, can be used for these purposes. कैसे काम करता है वो भी बताया. ये अलग इक्विपमेंट से डेटा कलेक्ट करता है, माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड करता है. So how it operates. Next, okay, so this can be used to find out the main reason why an incident or accident took place. Next, this is one of the highlights. It should be automatic in operation. कुछ नहीं करना होता है, ये करता रहता है अपना रिकॉर्डिंग. We are good. Next, slide 10. Components of the VDR system. Like we have seen in VDR, as we have seen in AIS and LRIT. What are the components? एक VDR system में कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिससे पूरा एक VDR बनता है. So here are 6 components of the system. First one is data management unit or data collection unit. Basically, this is the CPU, the main dabba, normally metallic. भीतर में सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, मदरबोर्ड, ये सब वो सब होता है. And there will be multiple interfaces available to connect devices. GPS की इनपुट लेनी है तो उसके लिए कनेक्शन होना चाहिए. रडार की इनपुट लेनी है तो कनेक्शन होना चाहिए. So many of them available. Audio module is all the microphones and the processing of the data inside data collection unit, where the audio is compressed and saved as a file. So managing the audio is on the same motherboard. Basically, there is a separate activity happening for audio, because there are information of different kinds here. पहला है audio signal, दूसरा है video signal coming from AIS, coming from maybe AIS, maybe not, but yes, radar ARPA, screen, ECDIS, screen. So these are various kind of inputs coming to the VDR. So it must be processed by different parts of the system. So that is audio module. You already know final recording medium. ये last device है जहां जाके सारे फाइलें सेव होती. When you are working on your mobile and computer, if you are recording a video, तो बटन दबाते हैं, वीडियो चालू हो जाता है रिकॉर्ड करना. रिकॉर्डिंग होने के बाद when you stop it, it is saved somewhere. किसी डेस्टिनेशन फोल्डर में जाके सेव हो जाता. बट ये डेस्टिनेशन फोल्डर है कहाँ? हार्ड डिस्क में है, मेमोरी कार्ड में है, SD कार्ड भी आता है मोबाइल में, तो वहां भी सेव कर सकते हैं. So that is final recording medium. As per new requirement,
there are 3 types of recording required. 3 copies of the same thing is recorded, available at 3 different places. What is the use of 3 different places? ये नहीं पकड़ में आई तो वो आ जाएगी, वो नहीं मिली तो वो मिल जाएगी. So 3 recording mediums are available, something called float free. The first one is float free. The next one is fixed. And third one is long term. LT for long term, not too much space. So these 3 types of FRMs are there, where the copies of data are stored. सब में एक ही चीज होगा, सब में चीज एक ही होगी. अभी से लास्ट 48 hours की रिकॉर्डिंग, but that 40 hours की रिकॉर्डिंग is the requirement here in this 48 hours, in this 48 hours, and in this one 720 hours. लॉन्ग टर्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 30 days का रिकॉर्डिंग रखता है, पिछले 1 महीना की रिकॉर्डिंग होती है. That is why we call it long term final recording medium. रिमोट अलार्म मॉड्यूल, जिसमें फंक्शनैलिटी दिखती है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, वहां लिखते हैं अगर नॉर्मल ऑपरेशन. आप गए पोर्ट में, आपने रडार बंद कर दी तो एरर कोड आ जाएगा यहां पे अलार्म मॉड्यूल में. या तो ये एरर होएगा कोड के नाम से, एरर कोड लेट अस से 502, तो आप मैनुअल निकाल के पीछे में देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 502 एरर. तो इट सेज रडार डेटा मिसिंग. देन यू आर हैप्पी, ओके बंद कर दिया तो मिसिंग हो गया, चल पड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा. और ऐसा होता भी है. इट इज ऑटोमेटिक इन ऑपरेशन. आपने रडार चालू किया, सब काम शुरू हुई तो रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी, और माल फंक्शन जो अलार्म था, एरर जो था, वो भी डिस्प्ले से चला जाएगा. So that is a remote alarm module. Replay station is basically a computer on which you can play the data. जो रिकॉर्ड तो हो गई, रिकॉर्डिंग के बाद when the need is, I should be able to play back and see the recordings. कि हाँ भाई लास्ट 48 hours की क्या रिकॉर्ड हुई है, देखे तो सही. So for that you need a computer. On the computer you will have to upload a software, क्योंकि what you have as a device is the hardware, but what is happening inside is software. So this replay station is nothing but another off the shelf computer, कहीं से भी मिल जाए, डेल का हो, कॉम्पैक्ट का हो, और भी जितने सारे होते हैं, एसर का हो, असूस का हो, सबके अपने अपने हार्डवेयर है. but in that we have to download different kind of software to run the file. एक्सेल की फाइल चलानी है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डालना होगा, वर्ड की फाइल चलानी है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना चाहिए, पिक्चर चलाना है तो ऑडियो विजुअल के लिए कोई मीडिया प्लेयर होना चाहिए. यस, कोई कुछ कह रहा है क्या? सर VLC कह रहा था वो ऑडियो प्लेयर के लिए. VLC, हाँ VLC, ओके. हाँ VLC इज ऑल्सो मीडिया प्लेयर. बहुत तरह के आते हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर है, VLC है, रियल टाइम रियल प्लेयर है, AVI प्लेयर है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं. So similarly, the data which has been saved in the FRM, final recording medium, is to be played, and to play that we need a software.
the software should be provided by the manufacturer. It can be installed on any computer, and the data recorded by the system can be read in that, can be reviewed, can be inspected. Final is reserve source of power, which is a battery basically. This is basically a battery, and backup is 2 hours. 2 घंटे तक ये सिस्टम को चलाएगा। यूपीएस जैसा चीज है ये, तो 2 घंटे तक की रनिंग टाइम है, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए 2 घंटे तक। आफ्टर दैट इट मे स्विच ऑफ। So these are the components of the system. सर ये बैटरी सर इसी में रहता है, जीएमडीएसएस से कनेक्ट रहता है सर? क्या चीज कनेक्ट होता है सर? जीएमडीएसएस बैटरी से कनेक्ट होता है क्या? इसका खुद का बैटरी होता है सर? इसका खुद का बैटरी होता है नॉर्मली। In general, regulation says that the GMDSS battery should not be disturbed. It should remain only for the GMDSS equipment. So communication के लिए जो बैटरी है उसका कोई लेना देना नहीं है दूसरी दुनिया से। All communication equipment is supplied by the GMDSS battery. इसीलिए जहाज में 2 अलग-अलग बैटरी बैंक होते हैं। गए हो ना बैटरी रूम में? दो बैंक लगी होती है, एक जीएमडीएसएस, एक इमरजेंसी सप्लाईज, तो दोनों अलग अलग हैं, एक ही से सबको नहीं करते। जीएमडीएसएस शुड बी इंडिपेंडेंट, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। सो आइडेंटिफाई इट हियर, द डेटा कलेक्शन यूनिट। ओ मुझको ऐसे क्यों करना? द डेटा कलेक्शन यूनिट, मेन डब्बा सीपीयू, second component the microphones installed at so many locations. Next, the final recording medium. Remember I said there are 3 types. So this is the float free type. कौन से कलर में हूं मैं? Okay, this is the float free, जो सोया हुआ है, that is the float free, fitted with an HRU. जब जहाज डूबती है तो the HRU will pop open and this will start floating on the water. The next one is the fixed type. It is fitted in the Monkey Island. जहाज डूबती है, साथ में डूब जाता है। जहाज में आग लगी है, साथ में जलता है, बट जलने के बावजूद इसमें डेटा है वो प्रायः इंटैक्ट रहती है। It is so constructed that whatever data is recorded, it is not getting damaged because of harsh conditions like fire, pressure, drop, shock. इन सब चीजों से कोई दिक्कत ना हो। So 2 तो नीचे हो गए, float free and also the fixed type. The third one is inside here, most likely the long term recording medium. ढक्कन को खोलेंगे सामने से, सामने में हार्ड डिस्क पड़ी हुई, खींच के निकालेंगे, अपने साथ लेके जाना होगा when the ship is getting abandoned. So that is FRM. The fourth one is alarm module, where normal function or some kind of other malfunction is notified here. It has got audio visual alarm. The audio alarm can be muted. Buttons are provided for muting it. So the audio alarm can be muted, but not the video alarm or visual alarm. जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आता रहे. So that's number 5. Sorry, number 4. Number 5 is the replay station. Normal computer, any computer on which the data recorded can be replayed back. Next one is the CPU, or sorry, UPS. Either it can be external
यूपीएस और इंटरनल यूपीएस। आपने यूपीएस में देखा होगा शायद छोटी सी बैटरी होती है। सिमिलर काइंड ऑफ बैटरी इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन दिस इटसेल्फ। या तो बाहर में होगा या भीतर में ही बैटरी लगा दिया जाएगा। मे बी द बैटरी इज पुट इनसाइड द बॉक्स। वी हैड दिस सिमिलर काइंड। ढक्कन खोलो, छोटी सी बैटरी उसमें लगी हुई है, which is good enough to run the system for 2 hours. Only those things which are already running can be recorded. मान लीजिए blackout हो गया तो कैसे होगा? So only those things which are in operation right now are getting recorded. Other things will not be recorded. So these are the components of the system as we discussed. When we meet after the lunch break, we'll take it forward. What data is recorded? पहले इसका review करेंगे black and white में. Then we will see what data is recorded by the VDR and few other things also we'll see. All right, any questions so far? No, sir. Anyone? Thank you, sir. No, sir. Thank you, sir. सर एक Thank you, बारी sir. वो FRU की 3 यूनिट्स थी, एक बारी प्लीज बता दीजिएगा वापस। अभी Float पूरा free? डिटेल में आएगा। अभी पूरा डिटेल में आएगा। ओके सर। या खाना पूरे खाने डिटेल में। हाँ, what are the properties of the FRM? What are the recording times required, etc., etc. Everything will be coming. ठीक है? ओके सर। थैंक यू सर। All right. चलो, signing off. We'll meet again after lunch. Okay, sir. Thank you. Right. Okay, sir. Thank you. Okay. Okay.